Hello everyone, here we are again, another episode of Back to Pavilion, powered by Provo. In the last few episodes, we talked about the ongoing World Cup, the strengths, the weaknesses of each team, how they will do. But you know what? No World Cup is ever complete without going back memory lane and being nostalgic about the World Cups we've seen or we've heard about, or our parents have told us about, or our uncles and aunts have told us about. I mean, आधे वर्ल्ड कप तो हमें से किसी ने शायद देखे भी नहीं है, राइट? पर हमने सुनी तो है स्टोरीज. सो वी हैव विद अस अतुल अगेन. आइए वापस. थैंक यू फॉर हैविंग मिस्टर क्रिकेट, जैसे मैं आपको बुलाता हूँ, इतनी नॉलेज कहाँ से है. एंड यू नो व्हाट, वी गोना इन दिस शो वी गोना डिस्कस ओडीआई कैसे शुरू हुए थे, पहले 3-4 वर्ल्ड कप कैसे हुए थे. अतुल, मतलब आपने जैसे बात करी ना कि अंकल लोगों ने हमें वो नॉलेज दी है, मेरे लिए अंकल आप ही हैं. आई थिंक मेरे लिए, मैं भी अपने लिए अंकल ही हूँ. नहीं, बट how ODI started, if you think of it, it's very funny to say the least. Right. मतलब कि एक टेस्ट मैच चल रहा है, 3 दिन बारिश हो रही है रैंडमली, और आपने डिसाइड किया, ये 71 की बात है. हाँ, दिस इज 1971, राइट, कि एक काम करते हैं, एक ओवर में 8 बॉल होंगी और 40 ओवर पर साइड का मैच कर लेते हैं. राइट. एंड देन दे थॉट कि यार ये फॉर्मेट तो सही है, एंड फिर इन्होंने बढ़िया ODI चालू कर दिया. एंड विद दैट फीलिंग दैट दिस इज गोइंग टू सक्सीड इन द फ्यूचर, ऑल इन ऑल एकदम से 1975 में वर्ल्ड कप आ गया. वाओ, ओके. I don't know many people who know this story यार. मतलब आप सोचो ना कि एक फॉर्मेट से दूसरा, अभी हम T20 की बात करते हैं ना, आउट ऑफ नोवेयर केम ODI, आउट ऑफ टेस्ट क्रिकेट. राइट, एब्सोल्युटली. टेस्ट मैचेस, ODI, T20, T10, 100, मतलब कुछ भी. इट्स ऑल हैपनिंग. Life is all about evolving and evolution, right? But evolving with cricket, like 1975, उस समय क्रिकेट, मतलब आप बात करोगे टेस्ट क्रिकेट में तो इट वाज मोस्टली ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड वी टॉक्ड अबाउट. Absolutely. द शॉर्टर फॉर्मेट एज वी नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्लाइव लॉयड एंड हिज टीम वेस्ट इंडीज, Yes. फ्लॉलेस एज एवर. और वहां से जिसको हम बोलते हैं ना वेस्ट इंडियन डोमिनेशन, वो शुरू हुआ. उस टीम में कौन था? द लाइक्स ऑफ गॉर्डन ग्रीनिज, ठीक है. क्लाइव लॉयड वाज द कैप्टन. Right. A 23-year-old विव रिचर्ड्स was there. और आप ये सोचो, ये सब ना मैंने पढ़ा है, ये सब ऑब्वियसली मैंने नहीं देखा है. Right. बट द थिंग मीन कि मैंने ये सब पढ़ा है एंड आई कैन एमुलेट द वेरी फीलिंग हाउ दे वर बैक इन द डे. ऑस्ट्रेलिया के लिए उस समय जेफ थॉम्सन, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर देयर वाज, एंड डेनिस लिली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट देयर वाज. ठीक है, ये सब खेल रहे थे. इंडिया के लिए उस समय, अगर आपको याद हो, इंडिया हैड देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री इन दैट टूर्नामेंट Against East Africa. ईस्ट अफ्रीका. Farooq Engineer was the man of the match in that. मतलब ये भी बहुत बड़ी फारूक ने लेगेसी कभी है. किसी को भी भूलने नहीं दिया है, पता है ना. Every time the people have talked to him, there has been a mention, right? But he was such a great player, and the first the first superstar from Indian cricket यार. I mean, Bill Cream का ad तो फारूक इंजीनियर ने किया था. And behind the scenes जो chirping जिसको हम बोलते हैं, फारूक was very good at it. You mean sledging? I'd say chirping, but yeah. तो 1970 Friendly chatter. friendly chatter, as Friendly you'd chatter. like As to I'd call like it. to call it. वर्ल्ड कप हुआ, कुछ नाम उठ के आए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो डोमिनेशन वेस्ट इंडीज का था, एंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जैसे हम बात कर रहे थे, बड़ी टीम्स थी. ऑस्ट्रेलिया मेड इट टू द फाइनल. Right. द थिंग बीइंग कि ऑस्ट्रेलिया ने कभी उस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं था, टिल द पॉइंट दे रियलाइज, ओके, वी आर गोइंग टू फेस इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल एंड वी कैन नॉट लेट देम विन. Right. Imagine a team being with that mindset going into a match. So who won the semi-final? Australia won the semi-final. Australia won the semi-final. They went on, played West Indies in the final, and वो तो उन्होंने खत्म कर दिया. वेस्ट इंडीज वन इजीली. तो 1975 में वो वेस्ट इंडीज की डोमिनेंस शुरू हुई, एंड इट डिड नॉट स्टॉप टिल 1979. It wasn't a fluke कि वेस्ट इंडीज अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, right? नहीं, मतलब आप ये सोचो कि यंग लोग हैं, जैसे कि मैंने बोला विव रिचर्ड्स इस Right. समय, Clive Lloyd experience. बट इट डिड नॉट फील लाइक दैट दोस पीपल वर, मतलब वो यंग शोल्डर्स पे जो एक होता है ना काम हेड, दैट वाज द केस विद वेस्ट इंडीज बैक देन. Right. एंड एरोगेंस नहीं थी, दे न्यू दे वर गुड Hmm. एंड दे मेक यू रियलाइज दे वर गुड. बट ऐसा कभी कुछ नहीं था कि वो एरोगेंस हो, हम अच्छा खेलते हैं, विल कम शो इट ऑन द फील्ड एंड लीव. Perfect. 75 और 79 के बीच में क्या हुआ? मतलब वो ट्रांजिशन हुआ, देयर टीम बिकेम इवन स्ट्रॉन्गर. इन द 79 वर्ल्ड कप they again had Clive Lloyd as the captain. Let's stop there for a second. 77 they went to Australia. Dennis Lillee, Michael Thompson. Jeff Thompson. Sorry, yes. Jeff Thompson traumatized them, right? And again they had to come back and think कि यार हम लोग को फास्ट बॉलिंग से ट्रॉमेटाइज कर दिया. And I think Clive Lloyd का पूरा उस समय ना वही बदल गया था कि अब मैंने सिर्फ पेस बॉलिंग लानी है.
And you know the people from the Caribbean, the West Indies, they're tall, well-built people. They went and found these tall. Like an audition की हमें हाँ, यही requirement हमें है और यही रिक्वायरमेंट चाहिए 6 फुट 6 इंच सिलेक्टेड Select. 6 फुट 8 इंच सिलेक्टेड 5 फुट 11 नहीं मैं तो कभी सिलेक्ट नहीं होता वेस्ट इंडीज के लिए मैं तो स्पिनर भी नहीं बनता आई थिंक इवन लैरी गोम्स वाज टॉलर देन मी Yes, he was. मतलब the fact that कि आप एक setback के बाद एक ऐसी टीम बिल्ड कर देते हो कि आपने कहा रुको. so they came into the 79 world cup with the 4 horsemen of the apocalypse Actually 3. 3 sorry yes you're A right lot of people do not know. including but not limited to me कि मार्शल नहीं था उस समय Malcolm Marshall wasn't there. There was Andy Roberts. There was Joel Garner. ठीक है. And उसके अलावा Michael Holding. Yeah. Marshall wasn't there. But at this time, Gordon Greenidge and Viv Richards, वो लोग ना वो groom हो चुके थे. right वो ODI क्रिकेट के फॉर्मेट में. Greenidge as an opener Viv at 3 right Viv at 3. Viv at 3 and even at 5. even at 5 तो if the need be if yeah हाँ तो आप ये सोचो कि जो डोमिनेंस शुरू में शुरू हुई थी 75 में which लोगों ने कहा कि थोड़ा फ्लूक भी हो सकता है. I'm sorry it wasn't a fluke. whispering death Michael Holding that's what they called him ना उसको वही बुलाते थे you know why they called him that क्योंकि जब वो रन अप लेके आता था किसी को सुनाई नहीं देता था you couldn't hear him running up to बॉल दिखती भी नहीं. बॉल दिखती भी नहीं थी मतलब इमेजिन आप खेल रहे हो अच्छा हो गया चली गई दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग. एंड सिर्फ वेस्ट इंडीज नहीं था उस समय यंग प्लेयर्स जो उठ के आ रहे थे दैट वाज इयन बोथम फॉर इंग्लैंड right David Gower फॉर इंग्लैंड एंड उसके अलावा सर रिचर्ड हैडली फॉर न्यूजीलैंड. हमारे इंडिया में अब देखो 75 वर्ल्ड कप में गावस्कर प्लेड दैट इनिंग 36 रन ऑफ 174 बॉल. ठीक है तो उस समय थोड़ा सा वो हुआ था कि ही कुड हैव प्लेड बेटर. ही वाज स्टिल इन द टीम इन 79 बट एट दैट टाइम द आई बॉल्स वर ऑन गुंडप्पा विश्वनाथ. ठीक है मतलब अ टैलिस्मैन फॉर इंडियन क्रिकेट. मतलब आप अगर very underrated ना हाँ nobody talks about गुंडप्पा विश्वनाथ but if you'll ask Krishnamachari Srikanth or a Ravi Shastri who was your idol at that point of time had to be Gundappa they'll say Gundappa Vishwanath. There is an interview of Shastri saying Gundappa Vishwanath flawless player yes I've like seen no that fear interview. whatsoever. Yeah so imagine being a player inspiring. मतलब हम अब सचिन को देखते हैं कोई जो कमिंग जनरेशन हो कोहली को देख रही है फॉर देम इट वाज विश्वनाथ. ठीक है मोहिंदर अमरनाथ वाज प्लेइंग इन दैट वर्ल्ड कप. कपिल देव वाज इन द टीम. right तो ये अपकमिंग प्लेयर्स बहुत सारे थे 79 में. बट एज आई वुड लाइक टू रिपीट एंड आई हैव रिपीटेड इट सेवरल टाइम्स अभी 79 वाज आल्सो a story about how West Indies decimated everyone. domination at a different level इंडिया अपना सारा मैच हार गया. हाँ जी ठीक है वेस्ट इंडीज आया इस बार उन्होंने फाइनल खेला इंग्लैंड से. and weren't England the hot favorites कुछ हुआ था ना किसी ने लिखा था इनको धूल चटाएंगे something like that was written I think that is something English media does right day in day out right. Viv Richards गए 79 फाइनल में 138 रन मारा और खत्म कर दिया इंग्लैंड को. wow मतलब एक मतलब वन साइडेड अफेयर आप वर्ल्ड कप में देखते हो ना. do you think the aura of Viv Richards started there or was it before I think that was 79. 75 he was still being groomed under Lloyd. right 79 में वो दिख गया कि भाई ये बंदा is going to be one of the greatest there is. तो Viv Richards, Clive Lloyd ये सब नाम और ये सब नाम वहीं रुके नहीं. आप Clive Lloyd का अगर 2 वर्ल्ड कप में नाम सुन रहे हो it happened again. He came back with a super team in 1983 as well. Ooh, 83 And at this time quartet complete हो चुका था. ठीक है Malcolm Marshall was also in the team. and Malcolm Marshall unfortunately or fortunately was the shortest guy out of the 4 right I don't know if you'll call that unfortunate. fortunate like Malcolm Marshall was the shortest guy but the fastest of the lot and मुझे उसका उनका रन अपना 92 वर्ल्ड तक पे भी याद है क्योंकि Malcolm played 92 as well and you know I remember वो सीधा नहीं भागते थे वो एंगल पे आके भागते थे. Actually that started with him if I remember correctly. Right. The likes of Shoaib Akhtar and all started that running थोड़ा sideways. Mervyn Hughes also used to run sideways. Yeah, Merv Hughes also used to do that. Yeah. तो वो that was a different way of generating that speed. Right. ठीक है कि आप एंगल के साथ आओ use that angle for you if it works for you. Like you see a Mitchell Starc not running straight. Absolutely. You see him running sideways. Yeah. तो that was the technique at that time. मतलब कि इतना दिमाग लगा के उन्होंने अपना pace. He knew that he is not tall. But he knew that he has other thing in his hand, his technique. तो मार्शल ने वहाँ पे कुछ किया. But 83 we remember for यार something 83 else. तो is I'm sorry but 83 is तो game changing for all of us. मतलब 83 was my first World Cup जो मैंने देखा था. Right, I was a young boy and my father used to love cricket. मतलब दीवाने थे क्रिकेट के लिए. I've picked that up from him as well. But उनकी दीवानपंती कुछ ज़्यादा ही थी. I'll get back to that in a bit. I think I've not met your father, but I do know वो दीवानपंती ना अभी भी है. दीवानगी जिसको हम बोलना right, sorry. He was, you know, I remember 83 का जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था. 70 या 79 तो मतलब
none of our parents ने देखा ही नहीं था, all on radio, right? My father used Because India wasn't serious about cricket at that Absolutely. point of time. 83 में टीवी था घर पे, ब्लैक एंड व्हाइट शटर वाला, राइट? उस पे देखते थे एंड मैचेस आफ्टरनून, लेट इवनिंग आफ्टरनून में चलते थे. It was great watching those matches with my dad as a young boy. So much I learned. I mean, And what India did in that, मतलब we'll talk about that later, जो उनने holistically किया. But to think of it, India started the World Cup and they defeated West Indies. And people think that's a fluke. But it's not. It's not, because just before that they'd gone to West Indies and Guyana में they Guyana, won. yeah. They won a one-day international in Guyana. They came in with enough confidence. इनकी एक बार हराया, एक और बार हरा सकते हैं. And Kapil Dev as a captain. Come on. आप ये सोचो ना, फनी चीज ये है, गयाना वाला मैच टेस्ट मैचेस के बीच में एक ओडीआई हुआ था एंड इंडिया ने कहा चलो ठीक है, इफ नॉट दैट दिस, वी आर गिविंग दिस आवर 100%. But again, a tournament of upsets, right? Zimbabwe beating Australia in the first match. Nobody saw that coming. Nobody saw that coming. आपने जैसे कि मेंशन किया अपसेट्स, India was a bit upset that Kapil was selected as captain. Right. The Haryana Hurricane, as we know him now. Yeah. But जो अब देखते हैं, अब lot of us have watched the movie 83 as well. I don't know how much truth there is. I think there's quite a bit of truth in that. I think it's a very accurately made movie. वो टीम ना कुछ अलग था, right? इतने Indian all-rounders थे उसमें. They had so many all-rounders. Everyone could bat and bowl. Roger Binney, Madan Lal, Amarnath, the most underrated player. But Amarnath, the way he could bat was something else. He inherited a lot of that from Lala, right? I mean, we have to talk about Amarnath. मतलब he got it from Lala, मतलब as it seems. इतने flawless वो थे, इतने flawless मोहिंदर I अमरनाथ. mean, at that point, I think the India में अगर कोई बैट्समैन पेस बॉलिंग खेल सकता था properly, it wasn't Gavaskar, it was Amarnath, right? Not just that, he's the only man जिसने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच किए. मतलब that is a very big feat. Absolutely, it's brilliant. Coming to other players. वेस्ट इंडीज को हराना देखो फ्लूक तो नहीं था, एज सिंपल एज दैट. हमने वो बात करी. द लाइक्स ऑफ मतलब यशपाल शर्मा ने, जिसको बोलते हैं ना एकदम प्रॉपर हिटिंग, 89 रन्स अगेंस्ट दैट वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक, एंड फिर उनको खत्म कर दिया शास्त्री और बिन्नी ने. 3 विकेट लिए एक मैच में. Till then 89 was the highest score ever scored by an Indian batsman in ODIs. अब आप लगा लो कि आप उसको फ्लूक कैसे बोल सकते हो, एक बंदा आके उतने रन बना रहा है. तो दैट वाज समथिंग ब्रिलियंट. रवि शास्त्री, लेफ्ट आर्म बॉलर, जिनको कभी बैट्समैन बोलते हैं कभी बॉलर बोलते हैं, नो वन नोज. ही टुक 3 विकेट. ठीक है, 3 विकेट. एंड रॉजर बिनी, मतलब ही वाज ऑल स्टॉलवर्ट. 3 विकेट उन्होंने भी लिए. तो नॉट अ फ्लूक टू बी ऑनेस्ट. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, यू कैन कॉल दैट एन अपसेट, नॉट अ फ्लूक. ट्रू. द राइट वर्ड फॉर दैट इज अपसेट. ट्रू. पता है सबसे ज्यादा दुख किस इन सबको होता है when they remember the 175 that Kapil played, right? But no one ever saw it. BBC was on strike that day. You know, we take watching cricket for granted. हम लोग सारे मैचेस देखते हैं, लीग्स देखते हैं, ODIs देखते हैं, सब मैचेस देखते हैं. Imagine BBC was on strike that day. आप ये सोचो ना, उस मैच में जिम्बाब्वे हैड अस रीलिंग एट 17 पे 5 विकेट गिर गए. 17 पे 5 गिरने के बाद में नहीं उठता कोई. कपिल पाजी ने कहा रुको, मैं उठूंगा. और पूरी टीम mongoose bat. 175 रन कम नहीं होते. आज के दिन में वो शायद कम लगने लगे क्योंकि डबल सेंचुरीज बन जाती हैं. इस वर्ल्ड कप में अगर इंडिया के 2-3 प्लेयर ने भी 170 पे बना दिए ना, मुझे बहुत मजा आएगा. इट विल बी अ बिग डील. इट विल बी अ बिग डील. और कपिल ने अकेले 175 बनाया. आप ये सोचो, मतलब इससे पहले क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने हमको धूल चटा दी थी. या वी लॉस्ट. हम 2 मैचेस हारे थे. वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड वी लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज अगेन. वेस्ट इंडीज 66 रन अगेन अ विव रिचर्ड सेंचुरी. या एंड उसमें मोहिंदर अमरनाथ आई थिंक स्कोर्ड 80 रन्स. Yeah, he was the highest scorer in that game. But वो फिर विव रिचर्ड्स took it and away we from had us. Zimbabwe को तो हराना, मतलब it was important. Otherwise we were knocked out of the World Cup. और आप ये सोचो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेवर चैपल was the one. Yes. It just felt like that he outscored the whole Indian team the way he played. तो हमें बाउंस बैक करना था. और वो 17 पे 5 होने के बाद तो वो फिर दिक्कत ही लग रही थी. I mean, yeah, this is that game where it's a mythical game, right? मतलब जो हमारे बाद भी people will talk about. हाँ, मतलब आप वो एक लेगेसी छोड़ के जाते बिल्कुल. हो. ठीक है, और छोड़ के जाने वाली बात नहीं है. इट्स आउट देयर इन द गोल्डन बुक्स ऑफ क्रिकेट. बना दिया. और उसके बाद उस समय ये था कि वी कैन स्टिल डू इट. देयर इज अ टीम, एज कपिल सेड, वी आर हियर टू विन. वी आर हियर टू विन. मूवी अच्छी थी. मूवी बहुत बढ़िया थी. आई होप इस बार भी लहरा दो इंडिया. कमिंग बैक टू द सेमीफाइनल, अगर वो फ्लूक बोलते हैं तो फिर क्या? वी डिस्ट्रॉयड इंग्लैंड इजीली. बहुत ही आसानी से. मतलब आपको लगा होगा कि भाई टक्कर का मैच होगा, इट्स इंग्लैंड वी आर टॉकिंग अबाउट.
उस समय भी उनके प्लेयर्स उठ के आ चुके थे बॉथम और ये सब खेल रहे थे. लास्ट बॉल याद है आपको? अमेजिंग. I मतलब mean, कभी देखने को मिलता है कि सारे फील्डर्स को एक साइड लगा दिया so that when the crowd comes into the field, you just run you away. just run away. मतलब And I think Sandeep Patil was batting at that point, and he had that wry smile on his face. वो हंस रहा था. किसी ने ऐसे सीन्स नहीं देखे आज तक. संदीप पाटिल, आपने नाम मेंशन किया, so Yes. we do need to talk about him. Again, as we talked about Vishwanath, Patil had that, as we call it, मुंबईया flair. Yeah. ठीक है, वो कवर ड्राइव को मारना एकदम फ्लॉलेसली जो होता है ना, और अटैकिंग क्रिकेट. मतलब उस समय ज्यादा लोग अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते थे. You know, one other player we haven't talked about from India at that point is Vengsakar. He got injured in the West Indies match. But Vengsakar became such a stalwart in cricket after that. 83 to 87 was Vengsakar's years. Yeah. एंड वो दिखा दिया उनने, जितना भी उनने खेला, ही शोड दैट टू अस कि हाँ भाई मेरा टाइम आने वाला है. एंड नॉट जस्ट दैट, आप अगर एज अ टीम भी सोचो, टीम का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था उन 2 लॉस के बाद, बट फिर आप जिम्बाब्वे से जीते. ठीक है, आपने फिर आगे सेमीफाइनल ऐसा खेला, तो दे मस्ट हैव थॉट यार यहाँ तक आ गए तो वी कैन विन द वर्ल्ड कप राइट नाउ. Absolutely. Absolutely. What a tournament. Final, man. Lords. 26th June. 25th June. 25th June. वो मुझे 26 तक याद है क्योंकि सेलिब्रेशन लंबी चली थी रात को. That's how 26 आता है मेरे मतलब दिमाग में. But 183 run. We 183. just scored 183. 183. These days, Virat Kohli, Saurav Ganguly, and MS Dhoni's highest score is 183. absolutely. Do you know my favorite memory from the match? Shrikant. Shrikant. For me, Fearlessly. देखो मैंने जब बैटिंग करनी शुरू की थी एज अ चाइल्ड, आई कॉपीड श्रीकांत स्टैंस. चीका सर. मैंने चीका सर का स्टैंस कॉपी किया था. व्हेन आई मेट चीका सर, यू नो, लास्ट ईयर आई मेट हिम, हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग हिम, टच्ड हिज फीट. मैंने कहा सर, मेरे लिए चीका सर, सी कपिल इज ऑलवेज अ लेजेंड फॉर मी, बट चीका सर इज अ लेजेंड. यार, ही वाज द सहवाग देन, ही वाज द मार्क ग्रेट बैच देन. मतलब द फ्लैम्बॉयंस आउट देयर. या मतलब आप एक बार शुरू हो जाओ तो आप ना रुको. टुकु नहीं करना. नहीं That's what he said. Such a great final, yaar. 183. Madan Lal was fabulous in that match. So was Mohinder Ramanathan. That catch. Again. Catch. Never forget that catch. Kapil ka wo running backwards, Vivian Richard changed the match. 183 in a final. Yeah. And that was defended. Yeah. And that became easily. Yeah. That became the change for Indian cricket. You can call it the Indian cricketing revolution. 100%. And you know that every 10-15 years there's a revolution that happens, and we'll discuss those in future episodes. But ये 83 का moment changed Indian cricket. Changed cricket, यार. We started believing that we can. Yeah. My father started believing कि हम जीतेंगे. Wow, man. I remember जीतने के बाद after we won the World Cup and, you know, trophy celebration and all, there was सड़क पे, you know, ढोल. My father put me on his shoulders. Like a lot of young sons that day जो अपने fathers के shoulders थे, I was one of them. That's when I fell in love with cricket. Must have been wonderful. मतलब Very emotional moment. I experienced another World Cup win in a hostel. That's a different रोने feeling. क्या था तभी पड़ी थी. But yeah, every time I think about the 83 World Cup, आंखों में आंसू आ जाते हैं. I can see that. Yeah. But the show must go on. The show must go on. Show must go on. Anyways, so I don't know whether you know this. How did the World Cup come to India? पहले 3 Prudential World Cup इंग्लैंड में हुए, फिर इंडिया कैसे आया? This is something I am NKP Salve, the president of the BCCI, didn't get tickets for the final. कसम खाली of the 83 World Cup. Yes. उनको फाइनल की टिकट्स नहीं मिली थी. And he said अगला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा. And then Reliance helped him. No money, but anyways, first time an Indian private company did it. And that's how the Reliance World Cup came into being. And it was in India and Pakistan. India and Pakistan, yes. India and Pakistan. That's a great story. But yeah. did India go as favorites in that World Cup 87? Both India and Pakistan went into Okay, the World Cup. home advantage. as they Not call just it. home advantage, because you have to understand 83 और 87 के बीच में India won the championship trophy, right? जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, the 5 nation, where India played unbeatable cricket. Gavaskar was the captain there. Indian cricket में आज गवास्कर, कल कपिल, फिर गवास्कर. So you lose a tournament, you lose your captaincy. So I think 83 के बाद 84 में India went to West Indies, destroyed. They were destroyed by the West Indies. Kapil was dropped as captain. Gavaskar came back on as captain. We won that tournament. Champion of champion. Audi आई थी पहली बार इंडिया में रवि शास्त्री के पास. We talk about that. So India came into the 87 as hot favorites, man. Hot favorites. And India and Pakistan, they were the teams talked about. Because 86 में Pakistan had suddenly beaten India in the Asia Cup. Right?
जावेद मियांदाद का वो छक्का आज तक मेरे कानों में गूंजता है, क्योंकि हमारे घर में ग्रीन एस्ट्रे थी जो पापा ने उठा के टीवी के अंदर फेंक दी थी. So that was the first time a TV was broken in my house in 1986. The Mauka moment for Mehak. Yeah, unfortunately father's been gone for many years. But वो एस्ट्रे अभी भी पड़ी हुई उनके टेबल पे. वो देख के मुझे 86 का मोमेंट याद आता है. But coming to 87, पहला मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था. Right, a very tight match which we lost by 1 run. I remember Stephen Waugh getting Maninder Singh out. Imagine a batting all-rounder, Yeah, bowling, getting the last wicket in a tough encounter. in a tough encounter. That was the Chennai match? That was the Chennai match, right? वो मैच मैं रेडियो पे सुन रहा था, घर में टीवी नहीं था तब. Of But course. Papa got another TV after that, so very grateful to him. 87, we should have won here. But that was the rise of Australian dominance. 100%. So to speak. We have to talk about Australia because if you look what happened between 85 and 87 to India, where they went up, Australia went down, right? Their old captain retired, cried in a press conference, right? And then they chose Alan Border to become a captain. And Border साहब ना वो हरियाणवी होते हैं ना हमारे, वो Border साहब was the हरियाणवी of Australia. जज्बा, जुनून, वो ठोस mentality, like a bit of हरियाणवी, a bit of Mumbai culture, संदीप पाटिल वाला culture. So he picked players जो वैसे थे, like a Stephen Waugh came in, right? A McDermott came in. Yeah, Craig McDermott was sensational throughout the tournament. I think he was the highest wicket taker as well. Yes, I think so. What a great tournament. England was doing well in that tournament as well. But the captain had a brain fade moment, that reverse sweep, if you remember. I might be wrong on this, but I think Javed Miandad played a similar shot against England in the semi-final. I mean, if you look back at that World Cup, Atul, बहुत चीजें हुई थी इस World Cup में. मतलब, to name a few. Chetan Sharma's hat-trick. And Gavaskar's only century came in the same match. Yeah, I mean, I have a question. क्या कोई Indian इस World Cup में hat-trick लेगा? I don't know. मतलब Shami did it the last time. Who knows इस World Cup में? बुमराह, अगर बुमराह को tail मिल गई, maybe. Kuldeep Yadav has 2 hat-tricks, Yeah. or even, I don't know, 3 hat-tricks. Two hat-tricks. 2 hat-tricks in ODI, so that's Right. a big deal. I mean, imagine Gavaskar, so many centuries in Test cricket. His only century in ODIs came against New Zealand. And we run riot against New Yeah. Zealand. We won by 9 wickets that Yeah, match. we won by 9 wickets, and Gavaskar played like Shrikant that day. I remember watching that match. For someone who played Yeah. पूरा 13 इंच का टीवी था. 13 इंच के टीवी पे I remember Gavaskar going, great guns, man. Great guns. What an inning. बट वो वर्ल्ड कप इस चीज के लिए भी याद किया जाता है जो अभी कंट्रोवर्शियल बोला जाता है, बट कर्टनी वॉल्श डिड नॉट, Absolutely, yes. as they call it, mankading. I do not. I call Yeah. it a run out at a non-striker's end. Yeah. He did not run out Salim Malik, Yes. and at the last ball, They won. Kadir ran Yeah. that run and they Kadir won. ran the run and won. I mean, they could have won that match. हाँ, But he मतलब didn't. What a gentleman Courtney Walsh. That's why they call him Sir Courtney Walsh. Sir Courtney Walsh, मतलब see, I mean, dividing opinions, Dividing opinion. gentlemen, but again, मेरे स्कूल में एक प्लेयर था सुमित धवन, उसने मुझे ऐसे आउट किया था एक बार. So Sumit, if you're watching, deservedly. Sumit, if you're watching this, thanks यार. Anyway, coming to the semi-finals. It was evident क्या सबको था कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा. And दोनों अपने घर पे खेल रहे थे. Pak was playing in Lahore and India was playing in Wankhede. Wankhede and Eden Garden में फाइनल था. Everyone was ready. But that was a heartbreaker. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को उस दिन न्यूट्रलाइज किया था. द वर्ड इज न्यूट्रलाइज. समवट पाकिस्तान शुड हैव वन, बट ऑस्ट्रेलिया टुक द चांस एंड टुक इट. इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया, ग्राहम गोज डिस्ट्रॉयड अस. पर उससे पहले ना, we forgot to mention one name, नवजोत सिंह सिद्धू. They started calling him Sixer Sidhu. बाद में उसको जॉन्टी सिद्धू भी बुलाया है. पर his first pet name was Sixer Sidhu. He was hitting so many sixes in the tournament यार. And even against England, he hit quite a few sixes. But then again, the luck wasn't in India's favor at that point of time. Right. And that inning from Graham Gooch, it just set the tone for England. And Absolutely. then India never made a comeback in that match. Graham Gooch loved India. Matlab, if you're going to score a century against them now and then, Yeah. you're going to love that country, right? Absolutely. And the final being between the Ashes, like Yeah. Imagine the greatest rivalry. England Australia playing at Eden Garden for a World Cup final. Right? That was a good game too. That was a good game. Just by 7 runs. 7 runs, very close throughout, up and down. बहुत up and down हुआ था उस मैच में. But I think Alan Border was tight and Mike Gatting. Reverse sweep. Like, what could have been वाली चीज है for England,
Right. It did happen like बहुत सारे साल बाद, but ऑस्ट्रेलिया ने उस समय दिखा दिया था कि it's not just about a West Indies or maybe India winning the World Cup. Right. They came and they were They like, saw, we are here to they stay. conquered, they won. So Alan Border at that time established the cricketing culture in Australia, Absolutely. and that was the turning point for cricketing altogether. Absolutely. पूरे I mean, world में. Mark Taylor came because of the Alan Border, right? The Waugh brothers, The War Brothers. मैकडर्मट और ऐसे bowlers उठे, उनने कमाल So I कर think जो दिया 83 इंडिया के लिए था, 87 also Australia. ऑस्ट्रेलिया के लिए था. Right. Yeah. तो फॉर अ फैक्ट मतलब कि ये सब एंड द फैक्ट दैट कि ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप था 87, ठीक है, जो कि ये 50 ओवर वर्ल्ड कप था. Yeah. क्योंकि 60 ओवर का तो हो नहीं सकता था इंडिया में अक्टूबर में. We didn't have that much time. Daylight. तो वो ओडीआई क्रिकेट में एक चेंज आया था. Absolutely. तो द फर्स्ट 4 वर्ल्ड कप्स वर द पायनियरिंग वर्ल्ड कप्स की हाउ टू शेप अप द I ओडीआई. played with a red ball. किसको याद है red ball से? Guess what? It Yeah. changed in the next World Cup. Yeah, we'll but talk about that in future episodes. But Atul, thank you so much for being again on the show. Thank you for having me again. It's been great. Guys, that's it for this show. Do stay tuned in. We'll be back for more shows and discuss other World Cups soon. Take care. Thanks.